Hello, Hi, Mr. Mehul. hi Amogh, how are you? I'm great. How are you doing? Doing good, man, doing good, man. Ah, All right, so let's just wait till like 11:10 or 5 more minutes and let everyone join, and we'll start the live then. yeah, no problem. All right. Hi, everyone. Join in fast. We'll be starting, and tell your friends to join in too. This live is going to be really cool. We're going to learn a lot of really nice stuff, really important stuff going forward. Meanwhile, can you tell me, what exactly, this Rotary Club and everything that you guys are doing? All right, sure. I'll give you a short Yeah. introduction of our club. Mm, So, mm, Rotaract is a worldwide organization, right? And mm. in that, it's like for young adults, for them, for their own personal and professional development, networking, and also to perform community service for the people. So, of that worldwide organization, you can start your own clubs in your cities or universities. So, in that way, we have one in Nasik. We have a lot in Nasik. So, the ours is the Rotaract Club of Nasik Youth Force, Okay. and that's what we do. Okay, so youth force, like all are young people who are Yes, young serving the community people service. who want to grow themselves and who want to do something great. Okay, so you guys are doing some activities in terms of diverse, right? Like all kind of Yes, activities. Oh, yes, all nice. kinds. Yeah. Nice. Good to see that. A couple these are things that are happening in Nasik. Good to hear that. Yes, yes. I'm going to mention that in my introduction of views now soon. Yeah. Like you're from here. Okay, I think Yeah. So yeah, we should start now, right? yeah, sure. About We can start, of course, the of time. course. So So we are going to let's go. just on the language. Like we can. I'm probably going to speak in English and Hindi as well. Yeah, We yeah. Let's mix can. English and Hindi. Yeah. Anything that's comfortable Yeah. I can even speak for you Marathi. and for the audience. I can speak Marathi as well, but I don't want to do that. So yeah, I'm sure. Okay. So, good morning, everyone. Hope you're having a splendid morning today. I am Rotractor Amogh Thakurdas, Director of the Professional Development Committee, and I will be conducting this live session. So, NFTs, right? NFTs are this fascinating mystery that I've been wanting to solve ever since I heard about them. But I think I speak for most people when I say that all I know about NFTs is their full form, like non-fungible tokens. I know nothing else, but I really want to learn. So this topic is very important, not just for the live, but for me personally too. And I'm going to ask you a lot of questions. I'm going to pick at your brain a lot. Okay. And you'll I get a lot of questions from the audience as well. sure. I got a Okay. habit to answer a lot of questions, so I'm up for that. No problem. So we'll be kicking off this live with a short introduction of our speaker, Mr. Mehul Patel. Mehul has been a technical evangelist, trying to, make sure all that new tech gets out there and everyone knows about it. And a product manager, a community manager, and he's also currently on the Mozilla Refs program on the council, and he's making sure that everything runs smoothly there. And another notch on his belt is that he's been a speaker and trainer addressing audiences in over 26 countries. So this man has a global reach right now, and he's trying to get his message out there, get technology out there. And a final thing that is very special to us is that Mehul is from Nasik. This is something I found out while talking to him. So this is a Nasik thing right now. Are you here in Nasik? You were going to be in Nasik today, right? I'll be in Nasik tomorrow morning. All right, great. So it's great to have you, Mehul. Thank you so much. And yes, and I'm a proud Nasiker because that is the first thing. The reason I said because I wanted to make it Hmm. because if something happening in my city and wanted to, so that was always in a motto to share about what I learned over these years, right? And since Nasik is a city where it comes with the two big metro giant like Mumbai and Pune,
which doesn't, get a lot of opportunity in terms of a networking. And so that is my vision as well, to, get the best out of it, and Nasikar get the best, in the industry, and they can use the ecosystem power, because there are a lot of things happening in the market. So that can be a leverage, and I could be the medium, because I learned by that sense only. So, and great that you guys are doing such kind of a thing. So kudos to you and your entire team. Yeah, I'm really happy we share the same vision, and let's go. All right. So the first question, basic question: what are NFTs? Now you'll have to explain this like we're 5-year-olds. Okay, we don't have a lot of tech background. So first, let's explain this as a 5-year-old. Then you can get into a more technical definition. Yeah. Anyways, I'm going to avoid all the technical jargons, because I've been to a couple of, where in my talks of there are 5 years, or let's say they're 60 years grandma also, they attended my session, and I had to be very flexible, right? So yeah, I had happened to be this kind of experiences. But in terms of NFT, I would say in a very layman language, let me explain in a very not इसको हिंदी में explain करते हैं, very simple, right? कि for example, let's say मेरे पास 50 रुपए है, I have a 50 rupees, right? और मैंने 50 rupees दिया अमुक को. अभी मैंने 50 rupees दिया आपको, तो then ultimately आपको मुझे 50 rupees वापस देना है, बराबर? तो अभी 50 rupees आप मुझे कैसे भी मीडियम में दे सकते हो. आप मुझे 10 रुपए गूगल पे करो, 10 रुपए कैश दो, बाकी के जितने बचते हैं वो वापस कैश दो या तो गूगल पे करो, बट कैसे भी करके उसका वैल्यू आपको मैच करना है, राइट? 50 रुपीज के आगे मुझे 50 रुपीज मिलना चाहिए, 100 रुपीज के आगे मुझे 100 रुपीज मिलना चाहिए. जैसे कि हम लोग कभी कभी इंटरचेंज भी करते कि मैंने तेरे को लेट्स से ये दिया, लेट्स से अपन किसी को गिफ्ट देते हैं, व्हेन वी आर गिविंग अ गिफ्ट, दैट आल्सो मैंने आपको गिफ्ट दिया, अपने माइंडसेट रहता है लाइक वी नीड टू गिव द गिफ्ट इन रिटर्न एज वेल. So that is nothing but the fungible, which has the equal value. जिस चीज का वैल्यू इक्वल है, 100 रुपए के आगे 100 रुपए मिल रहा है, that is okay, that is fungible. But when you are getting not the equal value, for example, let's say अभी आज do you like bike and cars? Yeah, sure. What do you like the most? अच्छा, let's go with a Rolls Royce Ghost. क्या बात है, मतलब Rolls Royce Ghost. Aim high. Yes, of course, that makes sense. So अभी Rolls Royce high का प्राइस क्या है? इंडिया में रहेगा 7-8 के आसपास, 7-8 crores. 7-8 crores, right? And think about the same Rolls Royce in like 80s model. So abhi, if you're going to buy the Rolls Royce, the car that you mentioned, you'll get the same price wherever you go to buy. But if the same car, it is in the vintage edition, so that could not be getting the same price, because it's a vintage, so that is not the same market value, right? उससे आपको ज्यादा ही मिलेगा. आज if you are going to buy a Mercedes very vintage edition of 80s, right? उसका प्राइस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, right? कितने की मिलेगी, भले उसका मार्केट प्राइस कितना भी हो. So that is called a non-fungible token, कि जिसका प्राइस इक्वल, जैसे कि let's say I like a shoes a lot. मैंने आज नाइकी का शूज खरीदा, अल्टीमेटली इसका प्राइस सेम है, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज द सेम ब्रांड, सेम शेप, सेम क्रिएटिव एंड सेम ब्रांडिंग, राइट? बट मैं नाइकी के ऊपर अगर मेरा नाम लिख दूं कि इट्स मेहुल एंड आई डू एम्ब्रॉयड, और मैं कुछ स्टिफ करवा दूं उसके ऊपर कुछ भी मेरा, सो नाउ दैट आई कैन गिव सम एडिशनल प्राइस ऑन द टॉप ऑफ दैट कि दिस इज आई डन समथिंग एडिंग टू दैट. सो ये अभी मेरा हो गया नॉन, आई कैन यूज दैट एज एनएफटी. ये मेरा हो गया नॉन फंजिबल आइटम, है ना? It's a very simple. तो मतलब they're supposed to be unique and they're supposed to be तो अलग, exactly unique होना चाहिए, because that is the most important part. It should be unique and it should be a value. Like for example, if let's say if I did that, अभी let's say अमोघ ने किया और मैंने भी किया, लेकिन उसके पीछे the most important part is who is doing that. If I am doing that, like Mehul is doing that, they know कि who does that. They know the people. So based on that, it create कि यार ये this is trustworthy, because in NFT we'll talk about that, how there are some kind of security risks also there in NFT marketplace as well. So वो भी अपन बात करेंगे, but these are the most important part, like who are building that, who are creating those NFTs, that is most important, है ना? So just like art, can we call it like art? It's the artist that matters instead of just the art. Exactly. तो पहले क्या होता था, for example when artists जो बनाते थे,
तो इनको इक्वल रेम्यूनरेशन नहीं मिलता था। फॉर एग्जांपल, आर्ट आपने खरीदा, आप किसी और को बेच सकते थे, बट आपको पता है कि जब आप बेचोगे तो हर एक आर्ट का एक एक्सक्लूसिव प्राइस रहता है, राइट? इट इज नॉट सेम प्राइस, यू कैन से दैट, कि बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स है विच आर लाइक सेलिंग लाइक ऑन $1 million प्राइस, Correct. but they are not, the artists who are making it, they are not getting direct benefit out of it. So now artists can create, क्योंकि उसका the people are creating the multiple copies of that, which is a biggest risk out से. So इससे ये Piracy. बच गया. Why? Because this is going इसमें technology plays a biggest role, because ये जो NFT जब को create करते हैं, so that NFT actually is going to store somewhere which actually see all these operations. For example, एक छोटा सा, जब बिटकॉइन आया था 2008 में, राइट, तब एक्चुअली किसी को पता नहीं था कि ये बिटकॉइन नथिंग बट उसमें देयर इज अ गाय कॉल्ड संतोषी नाकामोटो हु रिटन द व्हाइट पेपर एंड lot of interesting facts about the future technology, but he didn't mention about the blockchain specifically. But the technology that he refers over there, that later is named as a blockchain, उसका रीजन है क्योंकि हम लोग लेट्स से ऐसा नहीं था कि डिजिटल मनी पहले नहीं था. इन 90s एज वेल देयर आर पीपल हु स्टार्टेड डिजिटल मनी, बट द प्रॉब्लम इज, फॉर एग्जांपल लेट्स से आज आपके पास कैश मनी है 10 रुपए का, अगेन ये टेकिंग द एग्जांपल 10 रुपीस, तो यू नो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे आर गोइंग टू हैव, उनका एक काउंट है कि इतने ही नोट वो लोग छापेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन द मार्केट सो दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट. उसका चैनल चलना चाहिए इधर से उधर, राइट? इट्स नेटवर्क, पैसा घूमता है तभी वो बनता है आगे जाके किसी और को भी मिलता है. यू बाय सेल स्टॉक. बट डिजिटल मनी में द ओनली थिंग, लेट्स से इफ आई हैव अ डिजिटल मनी, सो मींस आई कैन क्रिएट अ डुप्लीकेट मनी, राइट? मैं अगर 10 रुपए का नोट ऑनलाइन बनाता हूँ और मैंने कहीं मिंत्रा पे जाके कुछ खरीदा, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ 10 रुपीज डिजिटल एंड आई कैन बाय फ्रॉम अमेज़न एज वेल. सो 90s में भी ऐसे कुछ टर्म्स आए थे विच इज कॉल्ड द डिजिटल मनी, बट इट्स फेल्ड and it is not accepted that in sense because उतना transactions में volatiles होता था बहुत. For example, आज की तारीख में ये सब स्टोर होता तो डेटाबेस में ही है, चाहे आपका फोन हो, आपका पीसी हो, या तो कोई भी चीज हो, आपके डॉक्यूमेंट्स है, उसको जो फाइल में भी स्टोर करते, दैट नथिंग कॉल्ड अ डेटाबेस ओनली, कि आपने उसको स्टोर करके रखा है फॉर एवर. बट एक बात बताओ, अगर आपने टेक्नोलॉजी को साइड में रखते हैं, हम लोग अभी भी हिसाब किताब बहुत सारा फाइल में रखते हैं, सीए वगैरह, अकाउंटेंट्स, दे कीपिंग ऑल द बुक रिकॉर्ड्स फॉर ईयर्स ऑफ ईयर. अगर मुझे देखना है कि 10 साल पहले अगर मेरा क्या था, मुझे ऑडिट रिपोर्ट देखना है, मैं देख सकता हूँ. बट डू यू थिंक कि वो ऑडिट रिपोर्ट जो भी है मेरे पास, जो मेरा डेटा है, उसको हैम्पर होने का चांस है? मैं उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट गायब कर सकता हूँ? पॉसिबल है ना? मैं डॉक्यूमेंट गायब कर सकता हूँ, कुछ ऐड भी कर सकता हूँ. देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. बट व्हाट द ब्लॉकचेन इट डज कि अगर इफ यू ऐड द डॉक्यूमेंट, इवन रिमूव द डॉक्यूमेंट, उसका भी वो रिकॉर्ड रखता है एंड it won't give you authority to delete or temper any kind of transaction. What is done, it is done because you don't have authority. Taking an example, मैं आज बैंक के पास जाता हूँ, बहुत सारे we heard lot of bank fraud as well, right? बैंक के पास I'm going and I'm depositing some money and then मुझे वहां से, let's say मैंने आपको ट्रांसफर किया, अमोक को मैंने ट्रांसफर कर दिया पैसे इतना, like 10,000 rupees I'm transferring. So I am requesting my bank from my account is going to transfer. So ultimately it is somewhere centralized over there. Bank knows what you exactly doing it. And my chances ultimately it's a database. Chances are getting, बहुत बार ऐसा you might notice कि आपका एंट्री नहीं आया है और डुप्लीकेट एंट्री हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है ना? वो मैंने I've seen couple of cases where my uncle my uncle gave me money to deposit in a bank account of 1 lakh rupees and तो उसमें वो एंट्री आया नहीं था, राइट? बट लेटर दे फाउंडेड द मिस्टेक एंड देन दे डिड द एंट्री. सो पॉसिबिलिटीज आर देयर. यहाँ पे क्या रहता है कि लेट्स से मुझे अगर आपको पैसे देना है तो मैं आपको एक ऐसे मीडियम से दूंगा जहाँ पे माय व्हाट आर द मनी आई एम गोइंग टू सेंड इज गोइंग टू बी वेरीफाइड. लेट्स से टेक एन एग्जांपल, 10 लोग हैं, 10 में से देयर आर 2 people which is Mehul and Amogh, right, which is going to be do the transaction. अभी मुझे आपको 1,000 रुपए देना है, राइट? मैं क्या करूंगा, मैं 1,000 रुपए मेरे पास है, अभी मुझे आपको देना है. तो क्या होगा, मेरे पास जो 1,000 रुपए है उसका वैलिडिटी करेंगे बाकी के 8 लोग, मतलब 8 जो सेंट्रलाइज सिस्टम्स है,
वहां पे वो वेरीफाई होगा कि जब भी मैं आपको पैसे भेजूंगा वो वेरीफाई होगा कि एक्चुअली मेहुल के पास 1000 रुपए है या नहीं। अगर मेरे पास 1000 रुपए है तो वो वेरीफाई करके वो आपको भेजेगा और यू विल गेट दैट 1000 रुपीज। बट दैट हैपनिंग ऑन द टू इंपॉर्टेंट साइड विच इज कॉल्ड द पब्लिक की एंड प्राइवेट की, कि जब भी मैं आपको 1000 रुपए भेजूंगा तो दैट 8 पीपल, और उसको 8 पीपल और कहते हैं 8 नोड्स और 8 सिस्टम्स दैट विल वेरीफाई कि यार मेरे पास 1000 रुपए एक्चुअली में है क्या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज नॉट इन कैश और नॉट इन माई बैंक अकाउंट, इट्स समवेयर इन द डिजिटल एसेट्स, राइट। इट विल वेरीफाई कि मेरे मेरे मेहुल के पास 1000 रुपए है। वो ऐसा हो सकता है कि 200 रुपए एक नोट के पास हो, 200 रुपए दूसरे के पास हो, 200 करके वैसे करके 1000 रुपए है मेहुल के पास इन टोटल। तो वो 1000 रुपए वो वेरीफाई करेगा with my public key and then you will get that 1000 rupees because they verified कि मेरे पास है। बट जब मैं 1000 रुपए आपको भेजूंगा तो वहां पे रिकॉर्ड हो चुका है कि मैंने 1000 रुपए आपको भेजा है और वो कभी भी टेम्पर नहीं होगा। कि इवन आप like if you go back to millions year back so you can see okay कहाँ किसने कितना पैसा मुझे ट्रांसफर किया है या तो कुछ ट्रांजेक्शन हुए, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, इन टर्म्स ऑफ एनी, इवन इफ यू ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन, राइट। तो वहां पे भी वो एक चीज रिकॉर्ड रहता है, यू कैन नॉट टेम्पर द डेटा बिकॉज यू आर नॉट द ऑथोराइज, देयर इज नो गवर्नेंस ओवर देयर who are authorizing that, because it's a technology governance who actually doing this operation, है ना। So these are the facts, this is the reason ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। और this is why ये when people are selling NFTs, तो NFTs उसके ऊपर बहुत सिक्योर है बिकॉज उसका डुप्लीकेशन आप नहीं बना सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल डुप्लीकेशन नहीं कर सकते, फिर टैम्पर नहीं कर सकते, कुछ हिस्ट्रीज वगैरह चेंज नहीं कर सकते, और बीच में भी कोई मिडिल नहीं आ सकते, है ना। नहीं सकते। और ऐसा नहीं कि ये नहीं, ऐसा पहले नहीं होता था। आई गिव वेरी गुड एग्जांपल। डू यू नो दैट वी कैन बाय अ लैंड इन स्कॉटलैंड? डू यू नो दैट? पता है आपको? यस। सो ये अभी का नहीं है, बहुत सालों से है। फॉर एग्जांपल इफ राइट नाउ फ्रॉम इंडिया इफ आई वांट टू बाय अ लैंड इन स्कॉटलैंड, तो मैं स्कॉटलैंड में एक लैंड बाय करूंगा और वो बाय करके मैं किसी को गिफ्ट भी कर सकता हूँ एंड इवन आई कीप इट फॉर माय सेल्फ एज वेल। when I buy that land, I'll get the one digital certificate, right, that I am the owner of that land, right? What does that mean? Ki I am not visited there, I am buying that land now virtually, it is physically present over there. I'm just giving you the difference between this and this, okay? So अभी मैं वहां पे जाके let's say I'm $100 I'll spending 100 pounds or I'm just buying that one and I'll get the digital certificate which proves that भले मैं वहां पे जाऊँ या ना जाऊँ, I'm the owner of that one, which is nothing but your digital certificate. The same thing which you are getting in NFT as well, which is a digital certificate that you are the owner of this. You are owner of but this. वो exactly, पर ये पहले भी ऐसा होता था। अभी मतलब this is like so many years is this happening. ये NFT के पहले की बात है या इवन ब्लॉकचेन के पहले की बात है। डिफरेंस बस इतना है कि वो ब्लॉकचेन के ऊपर है, फिर सेम डिजिटल सर्टिफिकेट है पर ब्लॉकचेन के ऊपर है। ब्लॉकचेन के ऊपर, बट द ओनली थिंग दैट यू कैन ट्रांसफर। अभी फॉर एग्जांपल वो लैंड मुझे किसी को ट्रांसफर करना है तो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, राइट? करेक्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यू कैन इजीली ट्रांसफर दैट एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीज, राइट? जब तक ट्रांजेक्शन होता है और वो वहां पे रहता है। बट द ओनली डिफरेंस इज कि वो भी एक डिजिटल एसेट्स का मुझे सर्टिफिकेट है दैट व्हाटएवर आई एम बाइंग आई एम गेटिंग, दे प्रूव दैट ए आई एम ओनिंग दैट पर्टिकुलर लैंड। Now what we are doing with the help of this ecosystem, we are buying the virtual land. Maybe it's present or not present, but we are actually buying that. We are building the house over there, and there are so many other ecosystems where I think there is one more platform like in 2 years back where with the help of tokens you actually buying and selling the property in UK. Yeah, so the token, if you have this token, it will symbolize कि you have this land. वैसा? Exactly. तो वो एक चीज है। So we got a message from Sarvain Rotakar. So he said that NFTs cannot be copied or subdivided. It is just recorded in a blockchain from where it can be bought or sold. Blockchain is used to certify the authenticity. So exactly. I think you said the same point, huh? Yes. Yes. Okay. Blockchain is so do that digital do that representation. Exactly. Blockchain actually do that math for you. For example, मैंने जो बोला कि ब्लॉकचेन को उसका नाम ही इसलिए कि ब्लॉक में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है वन बाय वन। द बेस्ट पार्ट इज कि यू कैन नॉट गो बैक एंड यू कैन चेंज समथिंग और टेम्पर समथिंग, जो हम लोग बहुत बार करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्कूल में या तो लेट्स से गलती से मैंने मेरे लैपटॉप पे सिस्टम पे कुछ क्रैश कर दिया, तो मैंने वो ब्रेक हो गया, लेट्स से मेरा ओएस क्रैश हो गया,
टेक्निकल लैंग्वेज कोई क्रैश हो गया तो मैं रीइंस्टॉल कर देता था, सारे सॉफ्टवेयर वापस इंस्टॉल कर देता था और वो डेटा है वहां पे। पर यहाँ पे सेम चीज आप कर रहे हो, बट कि अमोघ का सिस्टम क्रैश हुआ है और आपने वापस रीबिल्ड किया, वो दिखेगा। जैसे कि लेट्स से आपका शर्ट फट गया है एंड यू आर मेकिंग द स्टिचेस, तो आप उसको रिपेयर कर देते हो, किसी को पता ना चले हिसाब से। बट यहाँ पे कैसा, इफ यू डू दैट, उनको पता चलेगा कि आपका शर्ट फट गया था, आपने रिपेयर भी उसको पता चल। सिला कि आपको क्या। यस, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, बिकॉज दैट इज कम्स विद कि सिक्योरिटी है वो चीज का, कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एंड दैट प्लेज अ अच्छा, वेरी then why do they इंपॉर्टेंट say रोल। that there is anonymity here? वो भी बोलते हैं ना anonymous रहता है, but you're saying कि everything is recorded. तो एवरीथिंग फिर इज मतलब रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, राइट। बट वो होता है आपके और मेरे बीच में, पर वो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है दैट इज इन द इंक्रिप्टेड फॉर्मेट, इट इज हैड दिस वन उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी टेक्निकल टर्म, that makes you verify your transactions between one and other party, and for that we are using tokens to do that. So basically lot of people have a confusion about the tokens as well. For example, अच्छा, अब इथेरियम क्या है? Ethereum cryptocurrency, you know? नहीं, see, फिर that is the prediction. Ethereum is the blockchain platform, Ether is the token, हाँ, right? Ethereum, So Ethereum 2.2, both are platforms. it's a platform, it's not a cryptocurrency at all. It's a platform which people are using to build the application or the platform. For example, let's say let's say आपने कल कुछ कॉन्फ्रेंस किया या तो कुछ बड़ा इवेंट किया, तो इवेंट के लेट्स से इफ यू थिंक यार मेरे को इसमें आई वांटेड टू I want to go into blockchain and I wanted to build something where a platform for conference or event or meeting. तो वहां पे you can use the Ethereum blockchain to build it. You can use this Polygon as well, and there are a lot of other So all platforms of are available. these are separate blockchains, and They how are do they platform. differ? So basically all are differ based on their कि जिसका transaction, for example, if I want to do a transaction in Ethereum, तो Ethereum works on a very heavy machine, because इसको रन करने के लिए required heavy infrastructure भी चाहिए, right? So इसका जो transaction fees और जो mining fee रहता है वो बहुत ज्यादा है, gas fees बोलते हैं उसको, right? Which whenever let's say मैं जबकि आपको 1000 रुपए भेजूंगा, 1000 रुपए मुझे वापस भी मिलेगा, जो भी है जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन ये मशीन्स के थ्रू होता है, माइनिंग होता है, तो उसका एक फीस होता है, जब भी हम लोग आज बुक माई शो पे टिकट बुक करने जाते हो, टिकट बुक करने के बाद पता है आपको इंटरनेट Transaction हैंडलिंग फीस भी लेते fees extra रहता है. हैं, इंटरनेट हैंडलिंग फीस बोलते हैं उसको, वो लोग लेते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो जो सिस्टम दैट यूजिंग इट फॉर दैट दे आर चार्जिंग एक्स्ट्रा विच डजंट रिलेटेड टू एनीथिंग। ना वो टैक्स है, वो टैक्स भी नहीं है, वो है कि आप ऑनलाइन जो उसका एप्लीकेशन यूज करके विच यू आर डूइंग इट, उसका वो चार्ज ले रहा है। वो ना तो जीएसटी है, ना तो टैक्स है, ना तो कुछ भी नहीं है। दैट्स द रीजन दे सिंपली सेड इंटरनेट हैंडलिंग फीस, है ना। तो सेम चीज है, तो वहां पे गैस फीस तो हर एक इकोसिस्टम का कैसा है, लाइक उसके गैस फीस लाइक ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा, इथेरियम का गैस फीस बहुत हाई था, but after Ethereum 2.0 now that got decreases, but there are other very good platform who got a build on the Ethereum blockchain. For example, Polygon है, which actually helping the Ethereum blockchain systems. Polygon is from India, right? Yeah, Polygon is from India. Yes, Polygon is from India. So let's say the Polygon is a blockchain platform, but the Matic is the token. So ऐसा है। So जैसे कि सोलाना भी है, सोलाना इकोसिस्टम पूरा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म भी है, और प्लस एसओएल करके उसके सोल टोकन भी है। So ultimately you need a tokens to do the transaction which can verify or help you to make your transaction more smoother. तो NFTs is running on the blockchain platform, right? तो ब्लॉकचेन चाहिए क्योंकि वहीं पे आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, वेरीफाई करेगा कि यार ये एसेट एक्चुअली है किसका, और देन विल गिव यू द इक्वल वैल्यू, और वो वहां पे मतलब like it will be there for the million years until you have the only thing but you need to make sure ki whenever you there are three important things whenever you buying or selling an NFT or anything, right? Most important thing, first of all, you can always check ki who built that, as I said ki wo kisne banaya hai, who built that system, right? The people or the organization behind that NFT. The second most important point is कि what purpose they are solving. For example, like what utility they are providing. The most important part. Artists
में ठीक है पेंटिंग, बट व्हेन यू माइट हर्ड कि म्यूजिक फेस्टिवल्स है, उसमें भी नाउ एनएफटीज आ रहे हैं, एनएफटी कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, मेटावर्स हम्म, आपने सुना होगा, मेटावर्स। तो वहां पे वो जो टिकट्स होती है वो एनएफटीज टिकट्स होती है, राइट? तो हम्म, वो भी एक इंपॉर्टेंट है कि वो किसके थ्रू आ रहा है और वो क्या सर्व करता है। सर्व क्या पर्पस करता है कि विद दैट एनएफटी आई कैन अटेंड द मीटिंग, आई कैन अटेंड द कॉन्फ्रेंस, राइट? तो यूटिलिटी हो गया मेरा, हम्म, तो पर्पस सॉल्व कर रहा है कुछ, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। एंड द बेस्ट पार्ट इज I can, I will talk about the NFT use cases, what are the things that we can use as an NFT, because it's just not limited to artists. There are a हम्म, lot of great business use cases that everyone can think of, because I know like there are so many smart people out there हम्म. and they can build a lot of good stuff out there. Yeah, exactly. Once just everyone gets to know what NFTs are, people will get ideas immediately. Ki, Acha, okay, now I can do this with this. You know, Exactly. everyone can do that. So that's why we have a whole segment dedicated to the use cases and utilities of NFTs. Acha, okay, okay. Perfect. Then we'll talk on that right now, or we'll talk later? Acha, we'll get to that अभी एक दो questions के बाद में. Okay. For sure, for sure. Yeah. So we covered this थोड़ा बहुत, but why we have the same question at two levels. Okay. How can NFTs matter at a large scale, like worldwide? Okay. And then how can NFTs matter for the individual? Okay. For example, let's say for NFT and individual matters as well. For example, if you are a digital artist or you are an influencer, Hmm. right? That kind of, so that can matter. For example, recently Salman Khan launched his own NFT. Amitabh Bachchan, Hmm. has launched his own NFT collections. Hmm. So that is that you're using going to do a personal use, right? Because unme, whatever the character that he played, actually he is the owner of that character now because he played Okay. that. है ना? So that they're converting into that ecosystem, and people are now buying and selling that. So Hmm. as an individual purpose, like if you are a artist or if you are an influencer or have public figure, that kind of identity that can be useful. But with that sense, what are the purpose that you're solving? For example, let's say if you buy an NFT from Amitabh Bachchan, whatever he's selling. So उसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये हो सकता है उसका एज ए इंडिविजुअल कि विद दैट एनएफटी यू कैन बाय हिज all upcoming movies, right? Hmm. Or you can also watch all this old movies of like 80s or 70s movies वो आप सब देख सकते हो Hmm. in that one platform. So So it the becomes a one ticket. it become a ticket, and the ticket can be also transferable. Hmm. Yes, so that is another use case. We'll talk about that later. But yeah, that is the purpose that as an individual that can do. On a larger scale, let's take example जो मैंने आपको दिया था conference का, right? For example, if you're Hmm. planning a conference or a meeting, or let's say let's say a plane ticket, the best Hmm. thing, the financial organization, they can actually have the massive, जिसका massive transactions है, they can use NFT for sure, right? जिसका ticketing systems है, So for instead of बहुत example, सारे numbers वगैरह यूज करके डायरेक्ट एक टोकन से काम हो जाएगा उनका. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम लोग बहुत बार टिकट देते हैं कि यार कॉलेज में बहुत सारे टेक फेस्ट होते हैं, हम लोग Hmm. हमको टिकट वगैरह मिलता है, और वो टिकट कभी दोबारा यूज होता है? नहीं ना, वेस्ट हो जाता है. हाँ, बट स्टिल दैट टिकट इज यूनिक बिकॉज दैट माइट हैव योर नंबर. सो यूनिक नंबर होता है टिकट के ऊपर, एक सीरियल नंबर. 1 2 सीरियल नंबर होता है, प्लस आपका नाम भी होता है, आपका डेजिग्नेट लाइक स्टूडेंट प्रोफेशनल जो भी है वो होता है. बट दैट इज अगेन यूनिक बट फॉर दैट डे ओनली. उसके बाद कोई Hmm. पर्पस सॉल्व नहीं करता है वो. But think about the same event is happening in United States. You can actually use the same ticket and you can attend that event from there as well. So it doesn't have the boundaries, ecosystem boundaries. Hmm. Actually, it because ultimately blockchain is connected worldwide, right? It's anyways a digital platform, Completely a digital asset. decentralized. That's a decentralized that वो same चीज if you go to United States, ये वहां पे वो चीज सेम चीज हो रही है, आप वहां पे जाकर अटेंड करते विद सेम थिंग. और फिर मेरे बाद में किसी और को अगर किधर और अटेंड करना होगा तो आई कैन जस्ट ट्रांसफर टू हिम और सेम चीज के लिए वो अटेंड कर लेगा ना. कर पर सकते रिकॉर्ड होगा कि हैं, बट फिर पहले आप, मेरे पास था, हाँ फिर तो फिर, नेक्स्ट उसने अटेंड किया. हाँ पर उसमें ऐसा नहीं. बहुत बार हम लोग फिजिकल में ऐसा भी कर सकते, उसका डुप्लीकेट बना सकते थे. हम्म. आई एम श्योर बहुत लोगों ने किया होगा, मैंने किया है. आई एम वेरी ओपन की मैंने एक टिकट 2 बार चलाया है. आई हम्म. हैव डन दैट. बट वहां पे नहीं कर सकते बिकॉज दे नो
if that ticket is transferred to someone else, now you are not the owner of that ticket anymore. There is someone else is owner of the ticket. So he is going to get the benefit out of it, right? He can go and watch that movie or watch that or attend that meeting or whatever is his case, right? There is one very beautiful use case जो recently when I come across जहाँ पे airline ticketing system में भी you can have this one कि airline ticketing system. There is a use case. I'm not going to say कि where is going to applying because it's something that NDA signed, so I cannot cannot hold information. But yeah, when I was traveling 2-3 months back, so we encountered with a couple of use cases. They're very beautiful use cases that people are actually implementing. So उसमें ऐसा है, for example कि airline ticket है, तो airline ticket को they are going to use as an NFT, and you can for a year you can actually travel with that particular airline for n number of times. उसका restriction है, जैसे कि अपन कोई प्लान लेते हैं तो उसमें होता है ना कि आप 2 बार जा सकते हो, 3 बार जा सकते हो, 4 बार जा सकते हो, तो उसमें सेम है NFT का उसका प्राइस सेम रहता है, बट द बेस्ट पार्ट इज यू कैन ट्रांसफर 1 साल के अंदर. लेट्स से मेरे को 3 बार ही ट्रैवल करना बाकी, अभी मेरा मूड नहीं है, आई ट्रांसफर द टिकट टू यू, यू कैन ट्रैवल, बट जब ट्रैवल होगा तो उसका चेंज हो जाएगा, यू विल बी द ओनर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड ओवर देयर. सो दैट इज द बेस्ट. एयर माइल्स जैसा एयर माइल्स का कॉन्सेप्ट है ना कि इतने माइल्स ट्रैवल कर सकते हैं बस. नाउ इट्स ट्रांसफरेबल एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. Everything is recorded. So that is the best part, I would say, कि उसमें you are getting the best utility and you are not bind with anything. Sometimes let's say we buy a membership. Let's say आज नासिक में एक क्लब है ना, अपना ये BLVD क्लब है नासिक में. So BLVD we got the membership. अभी 1 साल में मैं गया ही नहीं एक भी बार, but still I have to pay that, like paid already, right? There is no use of it. Let's say if I got to know यार मैं जा ही नहीं रहा हूँ, so I can transfer the membership to someone else, right? Correct. Why do that? Because that is happening in a lot of. So these are the use cases, and these are also a problem statement in some sense. And it is very makes sense कि हम लोग बहुत सारे, let's say जिम का membership लिया 1 साल का, मैंने लिया था but मैं एक भी बार नहीं लिया, simple. So I wasted all money. Think about it, and actually people are implemented, by the way, in some countries for gym specifically. They created NFT passes. You can use that pass. And if you are, let's say, if you are coming for a month, you can just redeem that, and then if you are not, you can transfer to someone else. These are the use cases basically happening, by the way. That's the airlines one is not happening because that have a lot of government authorities and stuff. But yeah, the gym, because it's a private sector, anyone can. Even you can, like your Nasik road track, you can create your, if you planning any based memberships. You can plan. You can plan if you're planning any conferences. So with that conference, NFT, they can attend all the meetup throughout the year, all the conferences throughout the year, all the dinners or the coffee meetings or the one single year. है ना? I'll talk to our e-services committee for this. It's a very beautiful thing because that way, see, the best part is that way people in your network is getting aware of the ecosystem that is there in the market. So because ultimately the part of this community, even community groups or service, why? Because they're leveraging the platform and they're awareing the people and just try, use it and see how it's going to benefit it for all of us, right? So that is what for me it makes sense. So I think we should do that for sure. So बात करना इस चीज के लिए. माँ करेंगे बात. ये professional development committee का काम ही है. To level up everyone's skills. So now let's come to what are NFT marketplaces and how does buying and selling NFTs work? So there's so many actually. पहले like 2 years back there was very few, like there is जिसका हम लोग नाम याद रख सकते थे. But now if I talk about right now, there are so many platforms. But if I could name 3 or 4, so one is of course OpenSea, right? Then the second is Rarible.com. Then the third one is Nifty tokens. Then other one is Super Rare. So these are the where you can buy and sell the NFT.
it's a very it's not a very let's say it's not a very complex structure ki buy or sell kaise karna hai, complex structure nahi hai. You need to go there, but the most important thing, you need a wallet to do the transaction. The first important thing, wallet chahiye, right? So wallet, you can use the MetaMask hai, फिर Ethereum का भी है, but MetaMask is for me it's very comfortable because that give you the browser extension as well and the mobile applications too. So that way, you can easily integrate from the website and you can just make your transactions. So MetaMask I would recommend. There are a lot of others, right? Platforms are available, but वहाँ पे you need a wallet. Any kind of, you need a one wallet. Second is you need a token. For example, couple of every ecosystem like OpenSea supports Ethereum, so you need Ethereum token. But other platforms who are supports Polygon, Solana, so you can have that token. So the second step would be you need a token to buy, or if you're selling the NFT, then you don't need it in the beginning because ultimately you have your own digital asset and you're just putting it for sale or auction. It has two things, whether it's a fixed price or you can put it on the auction where people are bidding for your trade. But let's say if you're buying it, so you need a token, right? And once you have the token, from token whatever the NFT that you wanted, you can just simply buy from there, and if transaction is going to be happen, you can also see the transaction is going to record it on the Ethereum blockchain, and that that NFT is going to transfer into your wallet. So it is, you are the owner of that one. But if you are selling, all you need to do is just go to that platform. First step is needed. You need a MetaMask wallet or any other wallet. Then you need to upload your that asset. You need to put the description out of like what are the things that why what is NFT will allow you to do. what is the utility that is allow you to do and what exactly it does. Little bit of history about it. History is very important. Key why you created an NFT and little bit about yourself. If it's not an organization, if it's an individual, just put a small information about you, and what is the proof that you created the NFT. Put a pictures, create a video while you creating that art or something. So create a video that you actually prove that okay, you are the actually owner and it's a unique, and put that video also over there so that whenever the people are going to see, so they can also see the assets. कि भाई इन्होंने कैसे बनाया है. People are actually putting videos and all the reference photos which proves that it is developed by you and you are not just copy pasting from someone else and you selling it, right? So that is where you can just buy and selling it. The best part is the more you buy sell, it actually increases the transaction values. So because it's rely on the tokens. If the token value is also increases, this is also increases, right? और जितना ज़्यादा burn होता है उतना ज़्यादा उसका value बढ़ता भी है, market capital बढ़ता है उसका. So yeah, there are so many use cases around there. But yeah, this is a very simple. If you can just go and you can simply go and buy and sell NFTs on this platform. And the best part is, जो Rarible है, they will also give you an inside information about like history about the organization, like who built that system, and what sort of information. So that's pretty much information. If you're buying it, if you're selling it, then okay, because you are the owner of that one, right? If I'm just presuming you are not just copy pasting. So that is the reason it's very important that you should put some kind of a reference that proves that you created that material, So right? Point of reference, history, utility, and these other details to sell your own NFT. Exactly. And for example, we were talking about hypothetically, we're speaking, if we have one for a road track, okay, for our club. So will we post this on a marketplace or can we create our own different platform? If you going to create a whole different platform, that require a lot of infrastructure power and a lot of other things. But because we will only want to sell this NFT to our members, right? तो अगर marketplace पे post करेंगे तो फिर वहाँ पे तो सबको access मिल गया खरीदने का. तो we'll only want this available for our members. So what you can do, there is the one thing, you can also invite your members to buy it. That you can definitely do. Okay, we'll invite only NFT. Yes, but so for that you don't need to use the OpenSea. There are other platforms are available when you can just create the NFT tickets, because it's not just वो आपने कुछ बनाया नहीं है. It's just your utility. That is no single use that you are going to use as a utility. You can create your NFT tokens
tokens in the sense in the passes or something, you can invite your members, or you can also, for example, those are your members. Let's say आपके पास लिस्ट होगा कि आपके कितने मेंबर्स है, उनको डायरेक्टली वो टिकट भेज दो, सिंपल. So they are the owners. If next year, if they are, let's say, if we are not continuing with you, like after a year membership, they can transfer that to someone else. So whoever holds that NFT, they will be your members. Very easy. So that's only 1 year you have to do this stuff. Rest, like it will be automated process. Whoever you have your NFT, those are your members. So you don't need to recruit and all of other process and stuff is going to do. The best part is they can hold the utility, they can have the benefits, and also that price is that also increases the price. It doesn't have the same price. For example, if they buy the membership of 10,000 a year, might be chances that when they're going to sell it to you, let's say I have a membership I'm selling to you, I might be selling you on 20,000. Because the purpose of the NFT is utility, right? So it's serving. But now the price is different. Now. Achha. I don't think we're allowed to change the prices of our memberships, but we do change it according to the organization. So because we have guidelines for that. Okay. But yeah, what you can do, you not see. I think every organization actually adopting it. You can have that systems as well, but try to. So basically, when you educate people, when you actually try and implementing those stuff, so you can also try and implementing in your upcoming event where you just give them an NFT, a small passes or something, right? Or just a token of that they attended. You can also give that. That is as an NFT, you can just distribute it, the NFT attendee passes or the token passes. Recently, when I attended the Polygon event, they give this NFT tokens to every attendees. Every attendee got the NFT token. Yeah. So that is the best thing, right? So that also let people to be the part of your ecosystem, because let's say when you buying a share, so what does that mean? That though you are not the owner of, let's say you buy a Tata shares, though you are not the owner of Tata, but when you have a share, you can say that I contributed that to the company because I'm holding a share of that company. Am I making sense? Yeah, you are. So same thing. So basically, you are enabling the people to be part of an ecosystem. By just be part of those eras. So that's the best way, because that way you can get more members as well. Chances, right? People are more joining to you. Your organizer getting bigger and bigger and bigger, because you allowing people to be open. So the best part is it's a lot of open freedom is there, right? And all these platforms are the open source. Open source, that is a technical term. I don't want to go into that one, but yeah, it's openness there. There's a freedom there, right? Achha. So we have a couple of questions from the audience. Okay. So the first one is related to the topic we were talking about. Can we log on to these NFT portals just to see how this works? If we don't want to buy or sell, or just see, how the process works. You can. Yes, you can. You can. Even if you don't want to log in there, you just go to the marketplaces. Let's say Amazon पे जब जाते हैं, right? तो Amazon में log in करने की ब्राउज कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसका पूरा वैल्यू दिखाता है कि एंड इवन वो दिखता भी कि हाउ मेनी टाइम्स दैट एनएफटी एक्चुअली ट्रेडेड, कितनी बार ट्रेड हो चुका है, लाइक कितनी बार ट्रांजैक्शन हो चुका है, दैट यू कैन सी दैट. बट दैट ट्रांजैक्शन इट इज इन वेरी इनकम्प्लीट फॉर्मेट. यू कैन नॉट रीड, इट्स नॉट इन द रीडेबल फॉर्मेट, बट इज देयर, राइट? बस नंबर्स दिखते हैं और कुछ भी, नंबर्स दिखते हैं बस, और कुछ नहीं. बट हाँ, वो पूरा दिखता है कि उसका प्राइस पहले क्या था, अभी क्या प्राइस है उसका, हु आर द ओनर, अभी की हु इज द करंट होल्डर, दैट यू कैन डेफिनेटली सी दैट. Okay. Yes. And the next question is, can NFTs be useful to freelancers, and how? Freelancers, like for freelance artists or writers or this freelance can be used. Developers. How can freelancers benefit? So freelancer का benefit एक use case में ऐसे बता सकता हूँ. For example, let's say कि मैं एक freelancer हूँ. दो केस हो सकते हैं. एक तो या जो freelancer को काम देता है, या तो freelancer जिसको काम चाहिए. दो चीजें. मैं पहला चीज, अगर मैं freelance का कुछ काम मुझे करवाना है, let's say अमुक से कुछ करवाना है, तो मेरा कुछ NFT में बना सकता हूँ. तो वो NFT मैं आपको दूंगा, राइट? तो विच विल बी कि मेरा काम आप करने वाले हो, बिकॉज यू आर होल्डिंग दैट NFT, राइट? Until you are डूइंग माय वर्क, once that completed, you
you can that will be either उसका time duration रहेगा, it's valid for just 10 days, 15 days or 20 days, like that. You can also do that. इसका validity कहता है, utility you decide when you doing it, utility you decide. पर इसमें very limited use case है. Freelancer के लिए यूज केस आर्टिस्ट के लिए बहुत सारा है, राइट. डेवलपर्स के लिए एक्चुअली इतना कुछ है नहीं, बट आर्टिस्ट है, म्यूजिक आर्टिस्ट है, दिस इनके लिए डेफिनेटली बहुत कुछ है. फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट हु डज देयर एग्जीबिशंस. आपको पता होगा, एग्जीबिशंस करते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स करते हैं. द पीपल हु आर फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री छोटे छोटे कैफेज में जाके शो करते हैं, इफ यू नो दैट, राइट. कैफे में जाके जाते हैं, तो इसमें तो दे कैन क्रिएट दैट टोकन्स और एनएफटी, और if you have that token they can attend wherever you, if उनका event हो रहा है तो कुछ हो रहा है. If they have the art gallery or something, even if they want to buy your art, they can they can do that, right? Because ultimately आपने अपना सारा art marketplace पे रखा हुआ है, right? So that if you have that NFT, you can buy that one, and using that one, इसका multiple ecosystem भी हो सकता है. For example, if I am a music artist and I also do पेंटिंग एंड एज वेल, सो मैं मेरा आर्ट आप खरीदो, एनएफटी टोकन खरीदो, और इफ यू हैव दैट एनएफटी यू कैन आल्सो अटेंड माय एनी ऑफ माय इवेंट्स एज वेल, राइट. डबल होगा. यू आर नाउ द ओनर ऑफ दैट आर्ट व्हिच यू परचेज फ्रॉम मी. नाउ विद दैट आर्ट और विद दैट एनएफटी, नाउ यू आर आल्सो attending or getting some benefits which mention in that particular NFTs, right? तो प्रोवाइड करते हैं. तो ये एक क्वेश्चन आंसर कर दिया आपने जो आने वाला था, कि वो एक अनोइंग क्वेश्चन रहता है ना कि एनएफटीज का क्या पॉइंट है, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, है ना. तो नाउ द एनएफटी, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, बट दैट स्क्रीनशॉट वोंट लेट यू अटेंड स्टफ, और दैट स्क्रीनशॉट वोंट लेट यू डू स्टफ उसके आगे. तो एंड दैट आल्सो मींस बाय ए इज इक्वल टू बी की माय एनएफटी इज यूजलेस until I also have a utility to it. If it's just a piece of art, it can be screenshotted, but I'll add another utility to make it a complete package. Exactly. But मैं वही स्क्रीनशॉट के भी कुछ कर नहीं सकते, because when you have the token, आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया और उसका यूटिलिटी नहीं भी है, लेट्स से स्क्रीनशॉट लेके and try to sell, तो actually it always has a unique number, right? Okay. For an NFT का भी एक टोकन नंबर रहता है. If you are buying from let's say इथेरियम टोकन, तो एक इथेरियम आईडी होता है आपका, इथेरियम टोकन होता है बहुत बड़ा. तो so that token जब डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये किसका है, who is the actual owner. Let's say उसका यूटिलिटी नहीं है, फिर भी they can find it out कि इसका ओनर कौन है. Even if you screenshot, let's say मेरा एक NFT है, you just screenshot and you go, पता चल जाएगा कि यार you are not the owner of that one. Because that NFT is the only one NFT, और उसका है कि who is the owner of that NFT. So yeah, तो उसको वैसे भी, लेकिन हाँ, people tried that in the ecosystem, they try to bypass, but now it is very difficult, right? The most important time when people losing, there is one security concern as well, कि मैंने starting में बात किया कि that two most important aspect, public key and private key. Make sure you doesn't expose your private key to anyone, because specifically on social media, because Web3 or blockchain, this is mostly booming on the social media only. This is, you can say, a social media baby now, right? Social media पे ही ये सब कुछ चीज चलता है. तो whenever if anyone asking you, because बहुत सारे frauds होते हैं, like people asking you your कि यार आप इतने BTC खरीदो और फिर इस माइनिंग में लगा दो और आपको इतने इतने चीजें मिलती रहेगी. आपके बहुत सारे डेटा आपसे मांगते हैं. तो पब्लिक की जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट की नहीं जानी चाहिए. प्राइवेट चीज गई तो दैट विल ऑथेंटिकेट दैट ओके यू आर डूइंग दिस स्टफ, एंड दैट and once it's gone, like you cannot recover. जैसे कि चेंज वगैरह भी आपका नहीं, एक बार हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया, डेटा रिकवर कर सकते हैं. आपका टोकन अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, देन नो वे बैक. बैंक को नो वे बैक एट ऑल. तो इसीलिए आपका प्राइवेट की इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर आर ऑथेंटिकेशन मीडियम्स आर देयर. द मोस्ट पीपल नीड टू अवेयर ऑफ इट. फ्रॉड तो अभी भी होते हैं, बैंक के फ्रॉड भी होते हैं, है ना. कोई फोन करके बोल दे यार आपका इतना टिकट बुक किया, आप इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, तो लोग कर देते हैं, है ना. बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी होते हैं, मैसेजेस पे आते हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं जहाँ पे आपने विदाउट एनी थॉट. सो अल्टीमेट
So that is also fraud is happening. The only thing you need to know कि you should not provide your OTP. अभी ये चीज अवेयरनेस से आती है कि हाउ मच यू आर सेट, राइट? तो उसमें यूज केसेस होते हैं कि ऐसे स्टोरी बनाते हैं ना ये लोग, सो दैट वे यू डोंट रियलाइज कि यू आर एक्चुअली गिविंग योर ओटीपी बिकॉज देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर दैट दे बिल्ड, राइट? तो वो एक चीज का ध्यान कि कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक का कस्टमर आईडी, आपका ओटीपी और आपका प्राइवेट की, ये तीन चीजें कोई भी मांगे, इवन बैंक का मैनेजर आके मांगे, आपका दोस्त भी कोई भी आके मांगे, उसको देने का नहीं। सिंपल। तो प्राइवेट की भी किसी को भी देने का नहीं, किसी को भी देने, बिकॉज दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट की, बिकॉज दैट विल वैलिडेट। तो इसमें कैसा है, लेट्स से मैंने जब आपको 1000 रुपए भेजा, ठीक है, तो जब मैं आपको 1000 रुपए भेजूंगा ना, तो वो वेरीफाई करेगा मेरी प्राइवेट की के साथ। अगर मैं वेरीफाई नहीं करवाता तो ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो जाएगा उधर ही। पर वो जो अबॉर्ट हुआ ना, तो उसका भी रिकॉर्ड रहेगा वहां पे कि दैट इज अबॉर्टेड, दैट ट्रांजेक्शन डिडंट हैपन। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये सारे वॉलेट में व्हेनेवर यू क्रिएट अ पब्लिक की, और वो ऑटोमेटिक यू हैव टू क्रिएट अ पब्लिक की, अदरवाइज सॉरी प्राइवेट की, अदरवाइज यू वोंट गो फर्दर। You have to store it in a very secured way where you can, you know, and you should not lost it, because if you lost it, it's gone. बहुत सारे ऐसे हुए कि बहुत लोगों के पास बिटकॉइन थे लेकिन they lost it. पूरा गया, They lost it, they lost it. अभी गया, अभी कुछ आ नहीं सकता रिटर्न ऐसा. So that is, I think we got a couple of questions in the, yes, in the chat. we have a question. I'll start with the one above. Can we sell photographs through NFTs and is it efficient? You can sell the photograph, but the photograph, like for most important, that two aspect, जिसका फोटो खींच रहे हो और जो फोटो खींच रहा है, राइट? जो फोटो खींच रहा है, it will, he is not the owner of that photograph. He might be, let's say, a credit, मतलब he is the one of the responsible person who, you know, to do that photograph. जिसका फोटो खींच रहे हैं, तो most important कि वो फोटो, if you are own that one, or if you want to also, you can also give credit to someone as well, and you can, of course, you can use as an NFT because it's a unique photo, it's your photo, so you can definitely do that. बट ये चीज बहुत, जैसे आजकल नहीं, इंस्टाग्राम पे अगर फोटो डालते हैं तो हम क्रेडिट देते हैं कि क्रेडिट, ये फोटो किसने खींचा है, सो यू टू मेक श्योर दैट कि भाई ये, यू नो, you need to mention that as well. And yes, of course, you can convert your photograph into NFT and you can definitely sell it. Okay. Yes. So this is more useful for bigger photographers. Yeah, of course. And I think even in Instagram, if you have your NFT collection, you can you know, add your NFT connection to your Instagram profile as well. Like there is a section over there, you can you know, from the different wallets you can just gather and like a photo, NFT is nothing but, you know, some kind of यही रहता है, badge, ऐसे icon. Yes, icons. तो वो सारे आप अपने Instagram profile पे भी लिस्ट कर सकते हो. Instagram recently allowed that. Yes. This must be a new feature. I had no idea. It is there. It is there. You all need to do just connect your MetaMask or any other wallet, trust wallet, and वहाँ पे जितने भी NFTs होंगे वो ऑटोमेटिक आपके प्रोफाइल पे आ जाएंगे. People can see कि आपके पास कितने NFTs है. तो ये भी एक चीज है. वो NFTs आप अपने लेक्चर नासिक रोटरक का करते हो तो आपके नासिक के रोटरक के NFTs आप अपने ये जो पेज है वहाँ पे भी you can list that one. अच्छा, तो it will be like member का badge जैसा हो जाएगा. Exactly. So another question is, yes. How is it made sure that no two similar looking NFTs? So ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है, ऑफ कोर्स. बट जैसे कि अभी डिपेंड करता है कि ये जो NFTs है वो कौन से सेंस में है. फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ टिकटिंग सिस्टम, जैसे कि ना मैं बोला, जैसे जिसमें कि पासेस रहते हैं या तो टिकट्स रहती है, बस टिकट रह गई, ट्रेन टिकट हो गया, आई टिकट हो गया, ऐसा है, तो मेरा डिजिटल बैज हो गया, दैट हैज अ यूनिक नंबर कि वो ट्रांजेक्शन उसका रिकॉर्ड रहता है. यू कैन इजीली फाइंड इट आउट कि who is actually owning that one. But when you say, let's say I have a photograph, like it's my photograph, right? It's Mehul Patel. Let's say Mehul Patel is like dancing on some stage, and he created this video and just putting over there. Possible है कि वो same video कोई भी ऐसा download करे कहीं और पे डाल सकता है. But that you can use it on, but आप कहीं और पे, let's say if you go on some platform and वहाँ पे आपने डाला तो पता चल जाएगा कि यार ये already is owner of this video is Mehul Patel, is not someone else. Why? Correct. Because I already created the NFT, using that one.
वो वीडियो का भी यू कैन यूज एज एनएफटी, राइट? वो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है वहां पे, तो प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं कर सकते हो। फिजिकल डाउनलोड करके तो आप 1000 ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, बट एज ए इकोसिस्टम you cannot do duplicate because ultimately all the transaction is going to recorded on the blockchain, so it's going to be triggered. That's all. Yes. तो अगर मैंने बस 17 सेकंड का वीडियो है, वो एनएफटी है, ठीक है? राइट. उसको मैंने 16 सेकंड का ट्रिम कर दिया छोटा, और उसका एनएफटी बना दिया, या फिर मैंने उसके अंदर एक वाटर मार्क डाल दिया, मैं क्लेम तो फिर तो कम्प्लीटली कर सकता हूँ. डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गया ना? Completely different property हो गया, but that is still my property because I have the original this one. So basically it's always, आपको पता होगा कि कि if something is produced by you, it has the originality. उसका प्रूफ भी है. लेट्स से आपके डिवाइस से अगर कोई चीज दूसरी जगह जाती है, तो एज अ फॉरेंसिक इट्स एक्चुअली अ फॉरेंसिक साइंस कि आपका डिवाइस में जो इट इज, यू आर द जेन्युइन ओनर, और वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस कहाँ पे हुआ. अच्छा. देयर इज अ हिस्ट्री, बट वो हिस्ट्री कभी दिखती नहीं है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि डेटाबेस डिलीट हो जाता है, आपका हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाता है, पर हम डेटा रिकवर कर सकते हैं. तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड डिलीट. अच्छा. देयर इज नथिंग कॉल्ड डिलीट. इट्स जस्ट लाइक let's say if I have this one, if I want to delete this one, all I'm going to do is okay, it's deleted, but it is there. It's just so the history is there कि फॉर एग्जाम्पल ये है, तो मैंने ये जो ये केस है, तो मैं ये केस कहाँ से खरीदा, कौन सी कंपनी का है, ये सब चीज, भले ये केस मैं कल को उठ के किसी और को दे दूं, स्टिल इट इज देयर. अभी आप ये भी हो सकता है कि इसका ऊपर का ढक्कन हटा के मैं कुछ और डाल दूं और इसको मैं सेल कर दूं, बट नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका नंबर ऑलरेडी उसका रिकॉर्ड हो चुका है. सो सी द ओनली थिंग, लूप होल्स हर एक सिस्टम में लोग निकालने को बैठे. द ओनली थिंग this ecosystem folks is trying best to make sure कि how you can make prevention out of it, because that is most important. हर एक चीज में ये चीजें होती रहती है ना. the most important part is how you can prevent your stuff, and if they even trying to the kind that you said कि उसको edit करके डाल भी दिया, so पहली बात कि ब्लॉकचेन में तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डाल दिया तो that will definitely trigger, because है तो one उसकी, you don't have so many platforms to explore it. But ultimately, if you let's go to other platform, you are going to use the same blockchain technology, right? Though you using different marketplace, but tokens तो वो use करोगे, क्योंकि वो पब्लिक में जाके, जैसे etherscan.io पे जाके मैं मेरा जब डालूंगा तो मुझे पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा कि क्या हुआ है उसके अंदर. तो वो एक है. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जब डालते हो तो आपको उसका हिस्ट्री डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो दैट इज also matter. तो आपको डाल के भी ऐसे बहुत सारे NFTs ऐसे जो लोगों ने डाले, लेकिन उसका कुछ है नहीं, लेकिन that's just there. No one is buying, no one is even purchasing, no one has a utility, nothing is there. So what you have to prove that it is your property, first thing, because if doesn't have, people is not going to buy it for sure. First of all, पहले, क्योंकि there are very few, very close market. अभी बहुत बड़ा मार्केट है. People are actually studying it कि क्या चीज है, कौन है उसका ओनर, कौन है, what is the history, what is the proof that he is owning it. So ये सारी तो चीजें बहुत जैसे इंपॉर्टेंट कोई है, भी, क्योंकि मतलब एनएफटीज को कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज के ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा, वह अच्छा पूरा हिस्ट्री उसके सारे कागजात जैसे रेडी करने हैं, देन यू हैव टू प्रूव दैट यू ओन इट, एंड देन इट्स लाइक प्रॉपर्टी ऑनलाइन. एग्जैक्टली. तो दैट मेक्स सेंस. अभी आज मैं अगर घर खरीदने जाता हूँ तो ऑफकोर्स यू वेरीफाई एवरी डॉक्यूमेंट, राइट, कि हु इज द ओनर ऑफ इट. उसके सारे पूरा पता है, पूरा डॉक्यूमेंट बना के फाइल बना के देते हैं हमको. बराबर. क्योंकि वो उसमें भी चांसेस है बहुत सारे उसमें भी होते हैं कि किसी का प्रॉपर्टी किसी को होता है और वो सेल कोई और कर देता है. ऐसे भी केसेस सुने मैंने, राइट? बट ये चांसेस उधर भी है, इधर भी. बट ओनली थिंग कि उसका हिस्ट्री, कि कौन करता है, क्या करता है, वहां पे हिस्ट्री फिजिकल में टेम्पर कर सकते हैं, वहां पे टेम्पर नहीं कर सकते आप उसका हिस्ट्री. क्योंकि लोग, सी व्हेन यू इन्वेस्टिंग इन समथिंग, यू आप पढ़ते जरूर हो. फ्री में है तो भले ना पढ़ो, लेकिन अगर कुछ खरीदना है, पैसे डालने हैं, तो आप डेफिनेटली उसका पढ़ोगे कि यार मैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द मार्केट. एंड यू शुड, आई always say, you should invest only that much, that amount of money which you are ready to lose, right? कि it happens sometimes कि वो डाउन भी चला जाए, अप चला जाए. तो that is the reason you should always know कि
who are the organization or the individual behind that NFTs, what is the utility of it, right? और फिर उसको buy और like उसको sell मतलब उसको खरीदो. Otherwise, no need to do it. You can also learn that ecosystem and you can just sell it, like बहुत सारे ऐसे third party provider who just do buy and selling like a third party, they can also do that. But you don't, ऐसा नहीं है कि आपको बेचना है खरीदना है, ऐसा भी नहीं करना तो भी चलता है. There are so many other ways to be a part of the ecosystem. Okay, now we're nearing the end and we're extending thoda sa. So I'll try to get out a quick recap, okay, of in my mind of what NFTs are. Okay? So an NFT will be a token that is transferable. It makes you a part of an ecosystem, and it has certain utility, and it is unique. And you can use that to do something or perform some action, or use it as an investment or as something online where there is proof that this is yours. And whenever you transfer it, that proof is also recorded, and it has a certain history to it. And the value to that NFT is provided by either its utility or by everyone else, that just like a piece of art would be. A value of art is only valuable if everyone considers that it is valuable. Yes. So unless it is either it can be a utility or it can be collectible or it can be both. So is this correct? Yeah, it is correct. The only thing because ऐसे जो डिस्कशन होता है ना हमारे बहुत लंबे चलते हैं, because it's a very wide area. But just even I can end with that note only. Ki whenever it's just not about NFTs or tokens or in terms of anything. Whenever you do buying or selling anything which is so much dependent on the market or the ecosystem, make sure you do the complete research before you doing anything. If you don't have your enough research, I would suggest don't do it at all. Instead of that, take it as a learning perspective and use that in somewhere. You don't need to be a trader, or you don't just think of it. You have to earn money with the same ecosystem but in a different way, right? That's what I want to say in the end note. So make sure if you have research, and if you don't have, ask people about it. Communities are there, right? Ask questions, get the knowledge. But if you don't have enough information, don't do it, because there are so many other ways. Because people only know कि NFT trade buy sell करके पैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं है. Sorry. There are so many other ways where you can also you can as a learning perspective also you can earn a lot of things, right? So these are the use cases. Definitely I'll be available on LinkedIn or Twitter. I'm very active on that. You can just see if you have any question, if you do that. And maybe next time if I'll be in Nasik, we'll do that event in person where we can show some kind of demo and how it's actually going to be worked. Because I think that is pretty much let people, because everyone wants to utilize the technological ecosystem, right? So how it is going to fit in their business. So I think they will be more comfortable to even having those kind of discussions as well. So we'll definitely do that. We'll surely plan something for that. Yeah. If I ever get a chance, and I'll be definitely happy to do that for sure. All right. So I'll give a short vote of thanks now. Okay. So first of all, thank you very much for accepting and being a part of this live. And every single question that you had to go in such detail, and I really love that. I love your enthusiasm while talking about this topic. It really shows you want to spread this knowledge. That's something you told me too, right? In our chat, that you want to, uplift Nasik, and you want to get this knowledge about tech out there, bring everyone into Web3, Abhi. Take everyone to the next generation. Exactly. And so thank you for that. And thank you for being so patient and descriptive with every answer. And it was really nice. We loved this live. Yeah. I had a great. The only thing, as I said, I love the way what happenings over there, because I want that what I learned is like learn by teaching only. So I wanted to spread that across, and if I would do that for my city, why not? Though people, so many people don't know my fixed location, but just want to tell everyone, I'm from actual Nasik. I'm a Nasiker, and love to do that again and again. The only thing that whatever you guys are doing amazing work.
keep on doing that. And if you need any help from my side in the future as well, in terms of ecosystem or something, I'm just just a message away. I will definitely do that. And we're also a message away. If you ever feel like conducting some event or doing something in Nasik, we have a wide network here. We can make amazing things happen. Yeah, sure. And my plan for tomorrow is having the missile in Nasik. Oh, come on So over. that Invite me. I'll, We'll have I'll a great talk. yeah, definitely. So I'll drop you a message once I'll be Hmm. able to get free. Not Sunday is fully packed of mine, but maybe on Monday morning. Okay. Because that's my plan. If I will be Nasik Monday, पहले जाओ मिसल खाओ. Yeah, missile That first. of course misal first, man. Then comes later. Anyways, thanks for having me again, Yes. and thanks everyone. Hope I'm able to give the best from my own, and I'm able to explain in a very simple terms because I tried my technological jargons far I away. understood it. Okay. I'm not the smartest person. So it was very simple. Thank Perfect. you. I'm glad. Thank you so much. Bye everyone. Have a great Cheers. weekend. Bye bye. Thank you.